Good evening, dear students. Today I will show you the MCQ for operators chapter. Okay, MCQ multiple choice questions for operators in Java. Let us see the questions. Okay, I am hoping that it is visible properly. Yeah, it's fine. So starting with the first one. See, identify the operators which increases the value before use. यूज़ करने के पहले इंक्रीज कर देता है. प्रीफिक्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट. ओके, इंक्रीजेज द वैल्यू बिफोर यूज, इंक्रीज करता है. सो दैट विल बी ऑप्शन ए, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट. प्रीफिक्स इज दिस वन ऑल्सो बट इट इज डिक्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट वन, नेम द ऑपरेटर विच हैज टू ऑपरेंट्स, जिसके अंदर दो ऑपरेंट्स होता है. बाइनरी, यूनरी और टर्नरी. सो इट विल बी बाइनरी. बाइनरी मीन्स टू. थर्ड वन, द ऑपरेटर विच वर्क्स एज ए पॉइंटर टू अ वेरिएबल. इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? Means which helps to access the value of a variable. Pointer to a variable means pointer is an operator which is used to access the value of a variable. So this answer will be A, unary plus operator. Fourth one, identify this operator. Question mark colon. तो ये कौन सा ऑपरेटर होता है? यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. It is ternary because in ternary operator we use question mark and colon. After the condition we put question mark and between expression 1 and expression 2 we put colon. Number 5, identify this operator, equal to sign. Identify this operator. ये कौन सा ऑपरेटर है? Relational, logical और assignment. So it is assignment operator because it is used to assign any value to a variable. Number 6, if a is equal to 5 then what will system.out.println a plus plus print. ये क्या प्रिंट करेगा? a plus plus. system.out.println. तो देखो, this is a postfix operator, postfix increment operator. So it will not increase the value of a at the current place. It will increase in the next occurrence of a. Okay, so the value will remain 5 itself. Option B is the correct answer. Then number 7, if a is equal to 9 then what will system.out.println plus plus a print. Plus plus a क्या print करेगा? This is a prefix increment operator. So it will increase the value before use. So the value will be 6. Option A is correct. Number 8, if a is equal to 5 and b is equal to 6 then find the answer for a plus plus into minus minus b. So see, a plus plus is a postfix increment operator, so value of a will remain 5 only, multiplied with minus minus b, prefix है, so it will decrease, so b will also become 5. So answer will be 25. Option A, 25. Okay, next, number 9, which of these is returned by more than, less than or equal to. This is double equal to operators. इसमें से कौन सा डेटा टाइप रिटर्न होगा? ये तीनों ऑपरेटर्स है, इंट, फ्लोट और बुलियन. तो बुलियन इज द करेक्ट आंसर. वाई? बिकॉज दे आर रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न्स द आंसर इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स. So C is the correct answer. Number 10, modulus operator, okay, can be applied to which of these? Integers, floating point numbers or both? Okay, so modulus operator can be applied to integers. Why? Because modulus operator is used to find the remainder, and if your data type is of floating point numbers then no remainder will come. Number 11, what will be the output of the following program snippet? Class name modulus, any class name is there, public static void main, double a equals to 25.46, int b equals to 25. These are our values. Now a equals to a modulus 10.
So we have taken the value of a as 25.64, okay, and b as 25. So a equal to a modulus 10. What will be the remainder? A is of double type, that you have to find, and b is of integer type, b equals to b modulus 10, 25 modulus 10. Okay, so how will you find? Can you guess the answer? I am leaving this for you. Try it out. Okay. This one you can do very easily. B1 because it is integer type. A1 is of double type. So think and tell. In the next, when you watch this video, you can send your answer in comment. Okay. Otherwise, I will give the answer, but I am leaving it for you at present. Let us see. ठीक है. So system.out.println a and b both will be printed. So b is okay, 25 modulus 10. You can find out the remainder. Options are there. See the options. (5.64001). How many digits will be there? See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 digits, and the next remainder is 5. Okay, here also the first number is same, second one is 5.0, and in the third option 5 and 5.64 same number. Okay, try it out. The option is very clear. Or let me tell you, see, you do the calculation on your own. First one will be the answer. कैसे? देखो 5.64 था ना हम लोग का नंबर, 25.64. ठीक है, तो 25.64 मॉड्यूलस 10 एंड 25 मॉड्यूलस 10 ये है. सी 25.64 मॉड्यूलस 10 ऐसे है. ठीक है, दैट्स वाई द ओनली ये होल नंबर पार्ट जो है ना, इसका रिमाइंडर फाइंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5. ठीक है, और बाकी देखो वही है 64,0000. डबल डेटा टाइप एक्सेप्ट्स 15 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल साइन, तो पूरा 15 डिजिट्स दिखा दे रहा है. और बी 25 है, तो 25 मॉड्यूलस 10 तो 5 होगा ही. So it is displaying 5. This is the first number, this is the second number. Okay, so like this it is calculating. Next one, again determine the output. देखो, class test public static void main int I equals to 5, system.out.println I plus plus. अब यहाँ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज्ड है, सो दिस विल प्रिंट 5 ओनली. देन system.out.println I, नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट करेगा? इट इज़ द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ I, सो हियर इट विल इंक्रीज, 6 प्रिंट करेगा. देन system.out.println प्लस प्लस I, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है, तो पहले इंक्रीज कर देगा, उसके बाद प्रिंट करेगा. तो 5 6 7 शुड बी द आंसर. Okay, first one 5 6 7. I have written in the same line, but ln is there na, so it will come print vertically. ठीक है, तो 5 6 7 आंसर होगा. The next one, number 13, assertion reasoning. Assertion, unary increment operator increases the value before use. यूज़ करने के पहले इंक्रीज कर देता है. That is correct. Assertion is true. Okay, or is it wrong? You have to think and tell. Unary increment operator increases the value, that is correct, but not before use. Okay, that is unary prefix increment operator.
प्रीफिक्स पहले इंक्रीज करता है बिफोर यूज़, पोस्ट फिक्स आफ्टर यूज़, तो प्रीफिक्स टर्म मिसिंग है, तो इंटेंशनली आई हैव लेफ्ट दैट सो दैट यू शुड रियलाइज व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. एवरी टाइम assertion may not be correct, so this assertion is wrong, children. Okay, assertion in your unary increment operator increases the value before use. Reasoning, because it is written before the variable plus plus a, reason is correct but assertion is wrong, so our option will be D. assertion is false but reasoning is true. समझ में आया ना. नेक्स्ट वन नंबर 14 assertion. Ternary operator is known as a conditional operator. This assertion is true. टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम कंडीशनल ऑपरेटर होता है. रीजनिंग, बिकॉज इट गिव्स द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन गिवन. दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर ट्रू. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए. assertion and reasoning both are correct and reason is the correct explanation. फाइन. देखो नेक्स्ट नंबर 15. system.out.println function changes the line after printing the value, true or false. Here I can give two options only. Okay, system.out.println function changes the line after printing the value, तो ट्रू होगा. पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखा रहता है उसको प्रिंट कर देता है, उसके बाद कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में जाता है. नंबर 16. इन अ टर्नरी ऑपरेटर इफ द कंडीशन इज ट्रू then first expression executes, otherwise the second expression executes. ठीक है. It is easier to write in comparison to if else statement. रीड कर लो इसको अच्छे से. It is about ternary operator. Now read the above paragraph and choose the wrong statement. First one, in ternary operator if the condition is true then expression 1 executes. तो ये तो करेक्ट है. जब कंडीशन ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 1 रन करता है. टर्नरी ऑपरेटर एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन गिवन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. कंडीशन चेक होता है ना तभी तो एग्जीक्यूट करता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. देन थर्ड वन मस्ट बी फॉल्स. इफ टर्नरी ऑपरेटर इन टर्नरी ऑपरेटर इफ इवन, that is grammatical error is there, even if, not if, even if the condition is missing then also expression 2 executes. Okay, even if the condition is missing then also expression 2 executes, so this is wrong. If expression is missing then the ternary operator will not execute. ठीक है. so this is option C, sorry, not 3, option C is our answer. And the grammatical mistake I will correct it now only. Even if next one number 17. Choose the correct output of the given ternary operator. Int salary equals to 10,000. Double HRA equals to salary less than or equal to 10,000. Then 0.10 into salary means 10% of salary. Otherwise 20% into salary. So what will be the correct answer? The salary 10,000 है और 10,000 is less than or equal to 10,000. ट्रू है कंडीशन, लेस देन तो नहीं है बट इट इज़ इक्वल, सो एक्सप्रेशन 1 विल रन. 10% ऑफ सैलरी, सो 10% ऑफ 10,000. व्हाट विल बी द आंसर? 1,000.0 और 1,000 और 1,500 और 2,000. तो देखो 1,500 और 2,000 तो नहीं होगा, लेकिन ये ए होगा कि बी होगा? ए शुड बी द आंसर बिकॉज HRA इज ऑफ डबल डेटा टाइप. सो आंसर स्टोर्ड विल बी 1,000.0. Number 18. Choose the correct output of the given ternary operator. A equal to 10, B equal to 20. Int S equals to A less than or equal to B. तो ये कंडीशन ट्रू है. A is 10, so 10 is less than 20. तो एक्सप्रेशन 1 रन करेगा A plus B. So our correct option will be A. 30 will be the answer. Okay. So these are the MCQs, some MCQs related to operators chapter. So like this, similar questions will come in the exam. Keep on seeing the videos. Okay.
It will be helpful for your mock test, pre-boards, boards, everything. Especially I am uploading it for boards only. Okay. Thank you, students.